alaikum. In my last video, I explained and with the details what to take for the Hajj packing list and everything. So just few things left, and which I think it's necessary to take too. So I just bring here to show you, inshallah. So first of all, I forget to let you know that you need to take this kind or any other kind to weigh your आपका जो suitcase वगैरह होता है luggage. You can weigh weight वजन कर सकते हैं इसके साथ. दूसरे these safety pins, you can use it for your ihram, your scarf, or any other purpose. You can use this. This is very handy and helpful. उसके बाद I forgot to mention the lock for your suitcase. आप अपने suitcase के लिए ये छोटे lock हैं, ये ज़रूर ले जाइएगा, lock कीजिएगा. Shaving cream. Shaving cream ये तो खैर बड़ा size है, but you can get a smaller travel size with you. This is very important hanger, especially when आप जब मिना में जाएंगे, so you can hang on the door and put your the ihram or your backpack or anything. So this is very helpful during the Hajj season, especially in the Mina. So आप ये ज़रूर रखें. Amazon से मेरे ख्याल है मैंने order किया था ये 2 का या 4 का पैक है for $3.99 or something. So please take this with you. If you dye your beard or hair, just pack one of those colors. This is a janamaz. This is a plastic janamaz. You can take it and use it. It's a very light and very useful. Other thing is, this is the soap. This is paper, very thin paper, no weight. You can put under the water, और जब पानी के नीचे रखे आप इसको रब करेंगे ये soap बन जाएगा और dissolve हो जाएगा. So it's very handy to carry this. This is the name of the brand. This is ये जो है वो है odorless, unscented. इसमें कोई खुशबू नहीं है. खुशबू वाले भी हैं, but this is unscented. And finally, I wanted to show you. This is the dollar. This is a blue color dollar. देख लें, ये आपको लेके जाने अपने साथ, ठीक है ना, अगर आप कैश लेके जा रहे हैं. Not this one. This is the green one, right? So होता ये है कि या तो वो लेते नहीं हैं ये ग्रीन वाले ओल्ड नोट, और अगर लेते भी हैं तो इसका रेट कम देते हैं. तो मेक श्योर करें आप कि आप जो हैं ब्लू कलर का ले जाएं. और दूसरी चीज़ आपको मेक श्योर ये करना है कि डॉलर बिल के ऊपर कोई स्टेन या स्टैम्प या कोई सिग्नेचर और कोई भी कुछ ना हो, उसके ऊपर बिल्कुल क्लीन हो डॉलर. तो इंशाल्लाह इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द कमेंट्स प्लीज़ आप लिख दें जो आप इफ़ यू थिंक आई शुड ऐड एनीथिंग एल्स. सो जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम.